Friends, most of us know that pivot levels are being used by many people. Say 80 to 90% of the active community during the market hours are getting help of these parameters. Bazaar indicators is probably the only tool providing these pivot levels in digital form for day traders as well as for positional traders. Today we will try to understand how we can make use of it. The main and important feature of pivot level is that it helps in initiating the trade at any point of time, which we will try to understand. Again, advantage of pivot levels in our tool is working as value added thing, as it provides other crucial levels also which helps in initiating the trade. Now let us understand with the help of our tool. फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम बाजार इंडिकेटर्स में दिए हुए पिवोट्स और उसका यूज़ कैसे करते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे. बट बिफोर दैट, सबके दिमाग में एक क्वेश्चन है. आफ्टर ग्लोबल मार्केट्स परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट वीकेंड, अपना मार्केट में क्या होगा. तो वी विल ट्राई टू नो, पिवोट के हिसाब से ही समझने की कोशिश करेंगे. जैसा कि हम जानते हैं कि मंथ एंड के बाद ये पिवोट चेंज होता है. सो मंथली पिवोट 90 to 68 will play very important role on Monday onwards. अगर ये सस्टेन नहीं होता है तो लॉन्ग वाइंडिंग अप में प्रेशर ज़्यादा रहेगा. यानी ये अगर ये सस्टेन नहीं होता है तो सेलिंग प्रेशर विल इंक्रीज. सो फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स व्हाट वी हैव टू वॉच, 90 to 68 मंथली पिवोट, 9347 स्ट्रेटेजी ए लेवल, और ये अगर दोनों सस्टेन होते हैं तो वीकली पिवोट 9666 और 9745. ये चार लेवल 9268 के नीचे जाता है तो वन शुड रिस्ट्रिक्ट बाइंग. ये दो सस्टेन होते हैं तो पैनिक में बेचना रिस्की रहेगा. एंड ऑन द हायर साइड 9666 9745 के ऊपर नहीं जाता है तो वन शुड टेक केयर इन लॉन्ग पोजीशन. अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है, फ्रॉम मंडे 4 तारीख से 7 तारीख तक गेन टर्निंग डेज है. तो दैट विल अगेन बी ए वेरी क्रूशियल पीरियड. नॉर्मली गेन टर्निंग के डेज चॉपी रहते हैं, तो इट विल बी वेरी चॉपी वीक वी आर हेडिंग फॉर. सो ड्यूरिंग दोज चॉपी सिचुएशन वन शुड टेक केयर एज फार एज डे ट्रेडिंग इज कंसर्न. अब हम समझने की कोशिश करें पिवोट का इस्तेमाल कैसे करते हैं. तो नॉर्मली पिवोट यानी डेली पिवोट एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं आइदर साइड, परचेज का या तो सेल का, वी शुड नो सेंटर पॉइंट S1 and R1. Along with these three, one should take help of average trading price which is available in Odin screen. तो ये चार चीज अगर हमें पता है तो हमारी एंट्री प्रॉपर जाएगी. यानी मुझे बाय करना है तो इसके ऊपर होना जरूरी है, या तो सेल करना है तो इसके नीचे होना जरूरी है. Along with this, if I want to buy, तो एवरेज ट्रेडिंग के ऊपर होगा तो मेरा सक्सेस रेशियो ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेड इज बेटर. नाउ एज फार एज बाइंग इज कंसर्न,
yes, it is positive above this, but then along with this, average trading price is important and it works as वैल्यू एडेड थिंग. इसके साथ एवरेज ट्रेडिंग प्राइस की भी हेल्प लेनी जरूरी है. अगर दोनों के ऊपर है तो बाइंग कॉल का सक्सेस रेशियो बढ़ जाता है. सो दिस एज फार एज दिस डेली पीवोट इज कंसर्न, it is important from daily point of view. Now Monday and Tuesday, first 2-3 days, we have to take care of weekly pivot also. तो वो पोजिशनल के लिए भी काम आता है फॉर एंटायर वीक. सिमिलरली ये मंथली पीवोट, ये मंथली पीवोट में पहले 15 दिन यानी कल से जो नया महीना चालू होता है तो वी हैव टू टेक केयर इन ईच स्टॉक. अगर इसके ऊपर है तो ये पॉजिटिव बायस है. अलोंग विथ दिस वी शुड ऑल्सो focus on medium term trend. For example, we will see some stock for example ACC. अब 1179, see here it is a typical case. 1179 is a close. 1120 मंथली पीवोट के ऊपर है लेकिन इट इज नॉट क्रॉस 11. सो बायस पॉजिटिव होने के बावजूद अगर ये 1182 के नीचे है तो इट विल नॉट अट्रैक्ट बाइंग. टू एक्सट्रीम लेवल्स, इफ इट ओपन्स नियर दिस, यस वन कैन टेक रिस्क, बट फायदा कब होगा, इसके ऊपर जाएगा तब. दिस इज हाउ these two combinations works for positional call. So according to pivot, though we are above this, we should sustain, I mean Nifty 50 should sustain this to attract buying. Otherwise इसके नीचे जाने के बाद one should avoid long position. Then comes yearly pivot. So yearly pivot is at present is of no use because when this pivot was broken, heavy selling we have already seen. Now that question doesn't come. Yes, quarterly pivot is important. 95 यानी हमें 9268 से 9500 का एक बेल्ट है. अगर वो सस्टेन होता है देन ओनली इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट बाइंग. अदरवाइज फ्रेश डाउन ट्रेंड इज नॉट रूल्ड आउट. दिस इज आवर टूल हेल्प्स एज फार एज pivot levels are concerned. Finally, as we all know, under the shadow of global clues, our market to open negative, where one need to keep a watch on pivots such as daily, then weekly 9666, monthly and quarterly. These are three levels: 92, 68, 95, 13. After opening negative, if market succeeds in sustaining these to 9268 and 9347, then one should restrict in selling short. However, remain cautious if it fails in going above this. Short should be protected above this and long should be protected below this.
Now friends, we will have a look as far as reports are concerned in terms of pivot. Important is to know our portfolio status. We have one trend report where we can go to our portfolio and let us find out the status of our portfolio as far as monthly pivots are concerned. So this is the important support for these are the stocks of our portfolio, and if anything goes below these, then it will be risky to hold the stocks. Along with this, one can take the help of medium term trend, which is working as value added support. Now let us see another report, that is to identify the stock. There we have one report, price into center point. We can identify stocks trading above weekly. This report we can refer on Monday or Tuesday, and this monthly we will go to folder future near month, or we can go another folder such as mid cap. So which are the stocks trading or closed above monthly, this we can refer for next 15 days to identify positive as well as negative stocks. This report is very useful as far as monthly pivot is concerned. Now let us filter some stocks. Stocks we are searching for positive bias. See BPL, Blue Dart, and this column is for support. Ipca Laboratories, Hindustan Oil for example 40, Karnataka Bank. We will refer Titan here. Titan closing was 970, and which is the monthly pivot 956. Let us understand further. See, it is closed 970 and 956.65 is important support as far as Titan is concerned. If it sustains this, then yes, it will attract positive bias, and once it crosses this, it may go right up to 1022, and which is the quarterly, just for the knowledge, that again 998. So above 956 it is positive, where we can say positive bias above this, more positive above this for 998 to 1022. This is how we can filter the stocks, or we can identify the stocks based on pivot only. That's it. Thanks. If you found this information was helpful, please select the like icon and subscribe for our channel. You may also share it with your friends. If anybody is interested in further information about our tool, call on to me on this number or write to me at this email address. If anybody is interested in this application, it is available in Google Play Store. At present it is free. Further to this, you may also download through our comment available in video. Thanks.